गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है एक अमेंडमेंट को, जो कि कॉम्पिटिटिव रॉयल्टी रेट सेट करेगा हमारे कुछ स्ट्रेटजिकली सिग्निफिकेंट मिनरल्स के लिए, जैसे कि लिथियम और नियोबियम। ठीक है। अब कुछ ऐसे जो है 6 मिनरल्स हमारे लगभग, जिनको एटॉमिक मिनरल्स पहले कहा जाता था, उनको उस लिस्ट से निकाल दिया गया था गवर्नमेंट द्वारा, ताकि प्राइवेट सेक्टर की पार्टिसिपेशन हो सके। तो गवर्नमेंट एक तरह से धीरे धीरे रेयर अर्थ एलिमेंट्स या मिनरल्स को डीरेगुलेट कर रही है, ताकि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन हो सके और इसकी जो है माइनिंग जो है उसमें एफिशिएंसी आ सके। ठीक है। पहले तो हम समझते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या हैं। एक मिनरल क्रिटिकल तब होता है जब उसकी सप्लाई में की शॉर्टेज का रिस्क रहता है, या फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस है हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर रॉ मटेरियल। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और नेशनल सिक्योरिटी दोनों के लिए ही ये मिनरल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशंस, ट्रांसपोर्ट, डिफेंस, इन सब में ये मिनरल्स काम आते हैं। और ये मल्टीपल स्ट्रेटजिक वैल्यू चेन्स का हमारे पार्ट होते हैं, जैसे हमारी क्लीन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स या मटेरियल्स में यूज़ होते हैं ये। ठीक है। अब हमने ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे आइडेंटिफाई किया? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें 3 स्टेज असेसमेंट उन्होंने की। पहले तो उन्होंने देखा कि बाकी कंट्रीज़ जो हैं वो कैसे आइडेंटिफाई कर रही हैं इन एलिमेंट्स और मिनरल्स को। सेकंड स्टेज में उन्होंने देखा, इंटर मिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन की, कि कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जो क्रिटिकल हैं अलग अलग सेक्टर्स में। थर्ड स्टेज उन्होंने एक एम्पेरिकल फार्मूला बनाया ईयू की मेथडोलॉजी का यूज़ करते हुए, और फिर डिसाइड किया कि लगभग ऐसे 30 मिनरल्स हैं जो इंडिया के फ्यूचर के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं। अब अगर हम देखें स्ट्रेटजिक मिनरल्स के लिए, माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया गया, ताकि इंडिया के रॉयल्टी रेट्स ग्लोबल बेंचमार्क्स के साथ अलाइन किए जा सकें। तो अब एमएमडीआर एक्ट करंटली कहता है कि लगभग 12% एवरेज सेल प्राइस की लॉयल्टी रहेगी मिनरल्स के ऊपर। ठीक है। लेकिन अब कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया है रिसेंट, इसमें जो लिथियम माइनिंग होगी उसमें 3% रॉयल्टी सिर्फ जो है गवर्नमेंट लेगी। ठीक है। नियोबियम के ऊपर भी 3% ही लॉयल्टी दी जाएगी। और नियोबियम क्या है? एक सिल्वरी मेटल है, जनरली अलॉयज़ में यूज़ किया जाता है इसको, जैसे स्टेनलेस स्टील बनाने में, ताकि उसकी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव किया जा सके। और जो नियोबियम है ये जेट इंजन्स, बीम्स, गर्डर्स, बिल्डिंग के लिए, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस, इसको बनाने के लिए यूज़ होता है एज एन अलॉय। ठीक है। अब जो है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स होंगे उनके ऊपर तो सिर्फ 1% ही गवर्नमेंट रॉयल्टी लेने वाली है एवरेज सेल प्राइस पे। अब ये एवरेज सेल प्राइस क्या है, इसका भी गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रादर एक फार्मूला बनाया है कि कैसे कैलकुलेट किया जाएगा एवरेज सेल प्राइस। ठीक है। अब सिग्निफिकेंस क्या है इन रॉयल्टी रेट्स की स्ट्रेटजिक मिनरल्स के लिए? अब इससे होगा क्या? कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हो सकेगी इन मिनरल्स की, डोमेस्टिक माइनिंग जो है वो एनकरेज की जा रही है। ठीक है। कैबिनेट डिसीजन जो है उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी माइनिंग सेक्टर में, खासकर इन मिनरल्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं लाइम डिसीज़। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस के हेल्थ रेगुलेटर ने कोई भी मिसकंडक्ट नहीं पाया है क्लिनिकल साइट्स, जो कि फाइज़र और वेलनेवा जो फ्रेंच पार्टनर है वो लाइम डिसीज़ की जो वैक्सीन कैंडिडेट बना रहे हैं, उसके जो है क्लिनिकल साइट्स में उनको कोई भी मिसकंडक्ट नहीं मिला है। ठीक है। तो लाइम डिसीज़ क्या है? एक वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है। ये बैक्टीरिया से होती है, ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो जाती है ब्लैक लेग टिक्स के थ्रू। ठीक है। अब ये कॉमनली जो है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कुछ पार्ट्स ऑफ एशिया में रिपोर्ट की जाती है। इसके अर्ली सिम्टम्स क्या होते हैं? जो अर्ली सिम्टम्स जो इसके होते हैं वो 3 से 30 दिन के बीच में स्टार्ट होते हैं। एक रेड रैश अपीयर होता है बॉडी पर, जो बड़ा होता रहता है और वो गर्म सा फील होता है, वार्म सा फील होने लग जाता है। इसके सिवियर सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जो कि जॉइंट्स, हार्ट और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करें अगर आप इसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते हो तो। ट्रीटमेंट इसकी क्या होती है? एंटीबायोटिक्स। ठीक है। अगर बहुत एडवांस स्टेज पहुंच जाए तो इंट्रावेनस, मतलब इंजेक्ट करके एंटीबायोटिक्स देने की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डिसेप्शन आइलैंड्स। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा ने रिसेंटली एक पिक्चर शेयर की है डिसेप्शन आइलैंड की अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो डिसेप्शन आइलैंड क्या है? एक पार्ट है लाइन ऑफ आइलैंड्स का, साउथ शेटलैंड आइलैंड्स इनको हम कहते हैं।
ये नॉर्थ वेस्ट अंटार्कटिका पेनिनसुला में लोकेटेड है। एक एक्टिव वॉल्केनो है। मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी यहाँ पर। सेंट्रल पार्ट ऑफ द वॉल्केनो जब कोलैप्स हो गया, उससे सी वाटर यहाँ पर जो है सेंटर में पहुँच गया, जिसको हम कैल्डेरा भी कहते हैं। ठीक है, एक बहुत ही यूनिक लैंडस्केप है। पोर्ट फॉस्टर यहाँ पर जो है लोकेटेड है, जो कि वन ऑफ द सेफेस्ट हार्बर्स है अंटार्कटिक में। अब जो ये डिसेप्शन आइलैंड्स है, वन ऑफ द प्लेसेस इन द वर्ल्ड है जहाँ पर वेसल्स डायरेक्टली सेल कर सकते हैं एट द सेंटर ऑफ रेस्टलेस वॉल्केनो। अब ये जो वॉल्केनो है, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी एरप्ट नहीं होता। ये जो है पिछले अगर 19th सेंचुरी से हम देखें तो 20 बार एरप्ट हो चुका है। अभी करंटली अर्जेंटीना और स्पेन यहाँ पर समर साइंटिफिक स्टेशंस भी जो है मेंटेन कर रहे हैं, और इसको अंटार्कटिक ट्रीटी के थ्रू ही जो है मैनेज किया जाता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो है क्लेम कर रही हैं सोशल मीडिया पे कि इजरायली फोर्सेस जो है वो वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ गाज़ा पे यूज़ कर रही है। तो वाइट फॉस्फोरस बॉम्ब्स क्या होते हैं? वाइट फॉस्फोरस बेसिकली एक वैक्सी येलोइश क्लियर केमिकल है जिसकी पंजेंट स्मेल होती है। बहुत ही कम्बस्टिबल होता है, ये बहुत तेज़ी से बर्न होता है जब ये एक्सपोज हो जाए एयर से तो। और ये 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर बर्न होता है। ठीक है, ये फास्ट मूविंग वाइड स्प्रेड फायर्स क्रॉस करता है ग्राउंड में। इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मतलब स्किन के साथ ये वैक्स की तरह चिपक जाता है। और चाहे कोई बॉडी में आप बाद में बैंडेजेस भी लगा लो, जैसे ही बैंडेज रिमूव करोगे, क्योंकि वो स्किन के साथ चिपका हुआ है, दोबारा से ये इग्नाइट हो जाएगा और दोबारा आपको हार्म करेगा। इसलिए इसका जो यूज़ है वो बहुत ही टाइटली रेगुलेटेड है अंडर इंटरनेशनल लॉ, बट हाँ, ये बैंड नहीं है। अब ये एक इंसेंडरी वेपन है। इंसेंडरी वेपन कौन से होते हैं? जो बेसिकली अपने आप को आग लगा लेते हैं, डिज़ाइन टू सेट फायर। ठीक है, इससे बर्न हो सकता है, रेस्पिरेटरी इंजरीज हो सकती हैं, फ्लेम हीट कॉम्बिनेशन हो सकता है इससे। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली ने 1972 में इंसेंडरी वेपन्स जो हैं उनको कैटेगरी ऑफ आर्म्स व्यूड विद हॉरर में रखा है। और जो वाइट फॉस्फोरस है उसके लीगल यूजेस भी हैं, इसलिए शेल्स जो कि वाइट फॉस्फोरस फील्ड होती हैं उनको डायरेक्टली अभी तक प्रोहिबिट नहीं किया गया है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सायरत मटकल यूनिट। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी रीसेंट रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इसराइल की मोस्ट एलीट स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स सायरत मटकल ये एक्सट्रीमली डेंजरस हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन के लिए तैयार है गाज़ा स्ट्रिप में। तो ये सायरत मटकल यूनिट जो है, ये जनरल स्टाफ रिकॉनेसेंस यूनिट 269 भी इसको हम कहते हैं। ये एक एलीट कमांडो यूनिट है इजरायली डिफेंस फोर्सेस की। इसको 1957 में एस्टैब्लिश किया गया था। यूके के स्पेशल एयर सर्विस के ऊपर ये मॉडल्ड है। फील्ड इंटेलिजेंस गैदरिंग यूनिट है ये। डीप रिकॉनेसेंस करती है बिहाइंड एनिमी लाइंस, काउंटर टेररिज्म, हॉस्टेज रेस्क्यू बियॉन्ड इसराइल्स बॉर्डर, ये सारे जो है टास्क करती है। डायरेक्टली सबॉर्डिनेट है स्पेशल ऑपरेशंस ब्रांच ऑफ आईडीएफ। ठीक है, तो ये अदर इजरायली यूनिट्स के साथ मिलकर काम करती है। खासकर इसका रोल तब सामने आया जब 1976 में युगांडा में एंटेबे एयरपोर्ट पर जो इजरायलीज़ को फ़लस्तीनियन हाईजैकर्स ने किडनैप किया हुआ था, उनसे बचाने में जो है इन्होंने बहुत बड़ा रोल निभाया था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिलिका लेक। ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो माइग्रेटरी बर्ड्स जो है अपने चिलिका लेक के एनुअल जर्नी पर आना स्टार्ट हो चुके हैं। चिलिका लेक एक ब्रैकिश वाटर लेक है, शैलो लगून है, जो कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पुरी, खुर्दा और गंजम उड़ीसा स्टेट में लोकेटेड है। बे ऑफ बंगाल द्वारा कनेक्टेड है। दया रिवर के माउथ पर लोकेटेड है ये। इसको 4 इकोलॉजिकल सेक्टर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है ये माइग्रेटरी बर्ड्स का। वन ऑफ द हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का हमारी कंट्री में। 1981 में चिलिका लेक सबसे पहला इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया गया था रामसर कन्वेंशन द्वारा। और यहाँ पर नालाबन आइलैंड भी सिचुएटेड है, जो कि एक बर्ड सेंचुरी है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं रास्मुसन्स एन्सेफेलाइटिस। ये टॉपिक भी सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली एक सर्जरी ऑपरेशन किया गया है कैलिफोर्निया में एक हॉस्पिटल में, और उसमें हुआ क्या कि एक गर्ल चाइल्ड का हाफ ऑफ द ब्रेन को स्विच ऑफ किया गया ताकि उसको बचाया जा सके रास्मुसन्स एन्सेफेलाइटिस से। तो रास्मुसन्स एन्सेफेलाइटिस एक बहुत ही रेयर क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी न्यूरोलॉजिकल डिसीज़ है
जो कि सिर्फ हाफ ऑफ द ब्रेन को अफेक्ट करती है, वन हाफ ऑफ द ब्रेन को। जनरली ये बच्चों में होती है, 10 साल से कम के बच्चों में ये देखने को मिली है। और इसमें होता क्या है कि फ्रीक्वेंट और सिवियर सीजर्स होंगे, ब्रेन की इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, मेंटल डिटीरियोरेशन होगा और लॉस ऑफ न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जा सकती है? एंटी सीजर मेडिकेशंस दी जाती हैं, जो कि एंटी सीजर मेडिकेशंस जो हैं उससे कम्प्लीटली ये क्योर तो नहीं होता है, लेकिन जो है इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है एट द बिगिनिंग ऑफ दिस रेस्मिसन एंसेफेलाइटिस, ताकि सीजर्स वगैरह को मैनेज किया जा सके। अगर ज़रूरत पड़े तो ब्रेन सर्जरी भी की जाती है, जिसको हेमिस्फेरेक्टोमी कहते हैं, जिसमें कि वन हाफ ऑफ द ब्रेन जो है वो रिमूव कर दिया जाता है, डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ताकि जो है चाइल्ड को बचाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गोवन कैश्यू। तो ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली गोवन कैश्यू को जो है जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल गया है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है इंडिया की, और ये नेटिव है नॉर्थ ईस्टर्न ब्राज़ील का, लैटिन अमेरिका में। ठीक है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्चुगीज़ द्वारा 16th सेंचुरी में, और ये जो है लार्जेस्ट एरिया अमंग हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स जो है ये ऑक्यूपाई करता है गोवा में। इसको सॉइल और क्लाइमेट चाहिए होता है डीप सैंडी लोमी सॉइल्स, टेम्परेचर लगभग 20 से 38 डिग्री सेल्सियस का, रेनफॉल चाहिए होती है 2000 से 3500 मिलीमीटर के आसपास। और ये करंटली इसकी जो कल्टीवेशन है इसको नॉन ट्रेडिशनल एरियाज़ में भी किया जा रहा है, जैसे कि कर्नाटका, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इवन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिल रीजन। ठीक है, सो नाउ let us see all these topics in English. So the first topic is rare earth elements. This topic is important for your economy section. So central government through a cabinet approval has given has approved rather the amendment to a key law which would specify competitive royalty rates for some strategically significant minerals like lithium, niobium and other rare earth elements. So this decision is coming after the government's recent removal of 6 minerals from the list of specified atomic minerals, which would set the stage for participation of private sector in the auctioning of these minerals. Okay, so first of all we have to understand what are these critical minerals. So a mineral becomes critical when there is a risk of supply shortage and its impact on the economy is relatively higher than other raw materials. So these minerals are very essential for our economic development and national security, as they are generally used in high-tech sectors like high-tech electronics, telecommunication, transport and even defense. And they form part of multiple strategic value chains like clean technologies, information and communication technologies, advanced manufacturing inputs and materials, okay, like for defense applications, ceramics, etc. So how we have identified these critical minerals? So as per a report, on the basis of report by Ministry of Mines, we have identified 30 critical minerals. So this report was prepared after the panel decided to have a 3-stage assessment of a list of critical minerals. In the first stage, the panel looked at the strategies of various other countries like US, Canada, UK, Japan, etc. and identified a total of 69 elements or minerals. In the second stage, the interministerial consultation was held and they were asked regarding how and which minerals are critical to which sectors. So the third stage involved deriving an empirical formula based on the methodology taken by European Union, considering two major factors, economic importance and supply risk. After this assessment, a total of 30 minerals were found to be most critical for India. So for that, lower royalty rates have been identified. So the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957 has effectively aligned India's royalty rates with global benchmarks, and we have about 12% of average sale price as royalty rate for certain minerals which are not specifically listed in the schedule of MMDR Act. So after this recent decision of cabinet, lithium mining will only attract a royalty of 3% of ASP, and niobium mining would also be subject to 3% of ASP royalty. Okay, so niobium is a silvery metal and it is used in alloys, including stainless steel, to improve their strength.
And alloys containing niobium are also used in jet engines, beams and girders for buildings and gas pipelines. So this is the main this mineral is found in countries like Canada, Brazil, Australia, and Nigeria. And rare earth elements will have a royalty of 1% based on the ASP of rare earth oxide. Ministry of Mines has also laid down down guidelines or rules regarding how to calculate the average sale price of these minerals. So, how is it significant? Of course, now it will pave the way for commercial exploitation of these minerals. Domestic mining will be encouraged, and of course, it will also generate employment opportunities in the mining sector. Okay, so the next topic is Lyme disease. This topic is important for your social issues. So the US health regulator did not find any misconduct at clinical sites managed by Pfizer and Valneva, which is a French company, while they are making the Lyme disease vaccine candidate. Okay, so what is Lyme disease? It is a vector-borne infectious disease which is caused by bacterium Borrelia burgdorferi, and it is transmitted to humans through the bite of an infected black-legged tick. And generally, it is reported in North America, Europe, and some parts of Asia. Early symptoms start between 3 to 30 days after an infected tick bites the person. A red rash appears. It is called erythema migrans, and most people get this rash. It gets bigger over time, and it may start to feel warm. Then, of course, the other symptoms arise like fever, chills, headache, fatigue, muscle and joint ache. If it is left untreated, it can lead to more severe symptoms like affecting the joints, heart, and nervous system. So, what is the treatment? So, antibiotics are important for it. In if the disease gets advanced stage, then of course there is requirement of intravenous antibiotics. Okay, which are of course injected through a needle. So the next topic is Deception Islands. This topic is important for your environment section. So NASA has recently posted a bird's eye view picture of Deception Islands on its Instagram handle. So Deception Island is a part of line of islands called the South Shetland Islands. They lie northwest of the Antarctica Peninsula. It is an active volcano, and it was formed by a massive volcanic eruption, and it caused the central part of the volcano to collapse, and it allowed seawater to flood the center or caldera. So it has a unique landscape, and the island surrounds Port Foster also, which is one of the safest harbors in the Antarctic. It is one of the only places in the world where vessels can sail directly into the center of a restless volcano. And this is one of the two active volcanoes around Antarctica, which has erupted more than 20 times since the 19th century. At present, Argentina and Spain, they maintain summer scientific stations here, and this is managed as part of the Antarctic Treaty. So the next topic is white phosphorus bombs. This topic is important for your uh, security section. Several photos, videos, and claims on social media are saying that Israeli forces are using white phosphorus bombs on civilian population of Gaza. So what are these white phosphorus bombs? So white phosphorus is a waxy yellowish to clear chemical with a pungent garlic-like odor. It is highly combustible, which burns quickly, and it brightly burns when exposed to air. So it is used in incendiary weapons by militaries, and once it is exposed to oxygen, it gets ignited. Okay, it is used by armies to create smoke screens also in sensitive zones. It can cause fast moving and widespread fires on the ground. Once ignited, it is very difficult to put out because it clings to many surfaces including skin and clothing. Because it has wax like substance, it is very hard to remove, and it also lights up again once you remove the bandages. Okay, because it gets stick to your skin. Okay, so its use is tightly regulated, but of course there are examples when this white phosphorus has been used in wars by British Army, US forces. Even Israel admitted that it used it against Hezbollah during the Lebanon war. Okay, so what are these incendiary weapons? These are weapons or munitions which are designed to set fire or cause burns or respiratory injuries to people through the action of flame, heat, or combination thereof. And in 1972, the United Nations General Assembly passed a resolution calling these incendiary weapons a category of arms viewed with horror. So, white phosphorus has legal uses also. Shells filled with it are therefore not directly
prohibited by the international humanitarian law. So the next topic is Sayeret Matkal unit. This topic is important for your security section. As per recent reports, Israel's most elite special operations force, Sayeret Matkal, is preparing for an extremely dangerous hostage rescue mission in the Gaza Strip. So this Sayeret Matkal is also called General Staff Reconnaissance Unit 269, and it is a unit of Israeli Defense Forces, IDF. It is an elite commando unit of IDF, and it was established in 1957 on the ground or on the model of UK Special Air Service, and it is a field intelligence gathering unit which conducts deep reconnaissance operations behind enemy lines, and it is also tasked with counter-terrorism and hostage rescue missions. It is directly subordinate to the Special Operations Branch of IDF. It works in conjunction with other elite Israeli units also, and its role got confirmed in 1976 during the Entebbe airport raid, which was taken place in Uganda when Palestinian hijackers abducted 100 Israelis and took them to Uganda. Okay. So the next topic is Chilika Lake. This topic is important for your environment section. Migratory birds have started their annual journey to Chilika Lake. So Chilika Lake is a brackish water lake, and it's a shallow lagoon. It is spread across districts of Puri, Khurda and Ganjam in the state of Odisha. It is connected to the Bay of Bengal, and it is located at the mouth of Daya River. It can be broadly divided into 4 ecological sectors. It is also the largest wintering ground for migratory waterfowl found anywhere in the Indian subcontinent. It is one of the hotspots of biodiversity in our country. In 1981, Chilika Lake was designated as the first Indian wetland of international importance under Ramsar Convention. The Nalaban Island within this lake is also notified as a bird sanctuary under Wildlife Protection Act. So the next topic is Rasmussen's encephalitis. This topic is important for your social issues. So recently, special surgery operation was conducted by doctors at California by switching off half of the brain of a girl child to save her life who was suffering from Rasmussen's encephalitis. So it is a very rare chronic inflammatory neurological disease which usually affects only one half of the brain, and it occurs mostly in children under the age of 10. So once it occurs, the person suffers from frequent and severe seizures, inflammation of the brain, which is also called encephalitis, mental deterioration, progressive loss of neurological functions. So generally treatment include anti-seizure medications to manage the symptoms, but it of course does not completely manage seizures. Okay, immunotherapy is also given at the beginning to help manage these seizures, but the ultimate solution lies in hemispherectomy, which means brain surgery, and it involves surgically removing or disconnecting one half of the brain from the rest of the brain. Okay. So the next topic is Goan cashew. This topic is important for your economy section. Recently, Goan cashew has got the GI tag. So it is one of the most important plantation crops in India, and it is not actually native to India, but it was introduced by the Portuguese to Goa in 16th century. It is actually native to northeastern Brazil in Latin America. In the state of Goa, it occupies the largest area among horticultural crops, and it needs well-drained, deep, sandy, loamy soils for growing, and it is very well adapted to Indian coastal area during hot, humid conditions. It needs temperature between the range of 22 degrees to 38 degrees and relative humidity in the range of 60 to 95%. It requires annual precipitation of 2000 to 3500 millimeter. Extremely low temperatures and frost are not conducive to it. Okay, but still, this cultivation of crop of cashew is being extended to non-traditional areas in the plains of Karnataka, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, and even some parts of northeastern hill region. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.